Let us start with more questions of JEE and few questions will be repeated जो हमने पहले भी लिए हैं. Only thing is why I'm repeating because both of them are of course right. सिर्फ this time I will be giving you shortcut tricks to solve the same question that we have previously done in little bit longer way. 19th question: 2 kg of monatomic gas is at a pressure of 410 per 4 Newton per meter square. The density of the gas is 8 kilogram per meter cube. What is the order of energy of the gas due to its thermal motion? तो ऑफ कोर्स हमने कल भी इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया था. आपको पता होना चाहिए एनर्जी ड्यू टू थर्मल मोशन इज नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम nRT. देन इफ यू रिमेंबर हमने यहाँ पे nRT की जगह पे PV सब्स्टिट्यूट किया था बिकॉज PV इज इक्वल टू nRT. देन इफ यू रिमेंबर मैं लिख देता हूँ सिंस PV इज इक्वल टू nRT. देन इफ यू रिमेंबर in place of volume you write mass by density. Since density is mass per unit volume तो volume is mass by density. हो गया क्वेश्चन खत्म. एनर्जी इज इक्वल टू F. हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोटॉमिक गैस? कितने होते हैं? 3. तो 3/2. प्रेशर, हाउ मच इज द प्रेशर? 4 into 10 power 4 into mass. How much is mass? 2 and density is 8. Density is 8. Okay, तो ये हो गया cancel cancel cancel. 3/2 is 1.5 into 10 power 4. So what is the order? 10 power 4 joule. Done. Simple question. Next question. The gas mixture consists of 3 moles of oxygen and 5 moles of argon at temperature T. Considering only translational and rotational modes, the total energy of the system is. ये हमने solve किया है. Already we have solved. That's what I was telling you that we have solved this. कैसे solve किया था अगर आपको याद होगा. Total internal energy is internal energy of argon plus internal energy of oxygen. फिर आपने you have found out what is this F/2 RT, right? nRT of course number of moles से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको. ओके, तो ये आप फाइंड करते हो. सिमिलरली ऑक्सीजन के लिए फाइंड करते हो, दोनों को ऐड करते हो. दिस इज हाउ यू सॉल्व. बट नाउ लेट अस डू द सेम क्वेश्चन विथ अ डिफरेंट मेथड. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस. क्योंकि अब argon is monatomic, oxygen is diatomic, तो you are mixing one monatomic with another diatomic gas. तो इस केस में you have to know this formula N1F1 plus N2F2 upon N1 plus N2. This is formula for degree of freedom of mixture of gases. Okay, तीसरा होगा तो N3F3 upon plus N3 होगा. N1F1 plus N2F2 plus N3F3 upon N1 plus N2 plus N3. Number of moles of first gas is 3. Oxygen is diatomic. Degree of freedom 5. Plus how many moles? 5. And degree of freedom 3. Right? So this is 3 plus 5. So 15 plus 15 by 8. 30 by 8. Correct? So let us keep it like this only. ये हो गया आपका mixture, degree of freedom of mixture. What is the formula of internal energy in general? F/2 nRT. Okay, F mixture, right? F mixture. Now, तो F mixture कितना है आपके पास? 30/8. 30/8 into 2. Total number of degrees of freedom will be, क्योंकि sorry, not degrees of freedom, moles. Number of moles in the mixture. कितने मोल्स है टोटल? 8. ओके, इनटू RT. 8 कैंसल, 1 जा है 15 जा, तो यू हैव 15 RT एज आंसर. तो ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो उसको. मेथड नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन.
An ideal gas occupies volume of 2 meter cube at a pressure of 3 into 10 power 6 Pascal. Energy of the gas is, ये अभी हमने सॉल्व किया है. तो अभी अभी आपने देखा E is equal to F by 2 nRT which is F by 2 PV, right? अभी आइडियल गैस है एंड told you nothing मतलब which type of gas is this, बोला बताया कि मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है, नथिंग. तो जब कुछ बताया नहीं होता है तो बाय डिफॉल्ट टेक इट टू बी मोनोएटॉमिक. प्रेशर कितना दिया है 3 into 10 power 6. वॉल्यूम कितना है 2. कैंसल कैंसल. दिस इज 9 into 10 power 6 जूल. है क्या ऑप्शन नंबर सी. वेरी सिंपल क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. An ideal gas is enclosed in a cylinder at pressure of 2 atmosphere and temperature 300 Kelvin. The mean time between two successive collisions is 6 into 10 power minus 8 second. If the pressure is doubled, temperature is increased to 500 Kelvin. The mean time between two collisions will be close to. Good question. So if you remember mean free path. What is mean free path? What is mean free path? The mean मतलब average. The average distance traveled by a molecule between two collisions is mean free path. और अगर आपको याद होगा mean free path, if you remember, lambda is 1 upon under root of 2 pi n d square, where n is number density, number per unit volume, or d is diameter of the molecule. Then आपके पास इंफॉर्मेशन है प्रेशर का एंड टेम्परेचर का, एंड दे आर आस्किंग यू व्हाट इज मीन फ्री टाइम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीन फ्री टाइम, प्रेशर और टेम्परेचर का इक्वेशन बनाना पड़ेगा. मीन फ्री टाइम, प्रेशर एंड टेम्परेचर. So let us bring time here first of all. How can you bring time into this equation? What is velocity? Definition of velocity: distance upon time. So time is distance upon velocity. So mean free time t is distance upon velocity. ये velocity है. Do not confuse this with volume. This is velocity. So this is equal to, एक काम करता हूं मैं इसको v एवरेज लिख देता हूं. एवरेज वेलोसिटी मतलब v एवरेज मतलब वेलोसिटी. तो लैम्बडा इज 1 by root 2 pi n d square और ये आ गया v एवरेज. गुड. देन इफ यू रिमेंबर, जैसे मैंने आपको अभी अभी बताया, small n was number of molecules per unit volume. तो वॉल्यूम गया ऊपर, ये आ गया वॉल्यूम into d square and v average. करेक्ट. बट इफ यू रिमेंबर यहाँ पे v average मतलब v RMS लेना पड़ता है, और आपको पता है कि v RMS is अंडर रूट ऑफ 3RT by m. तो अंडर रूट ऑफ 3RT और मॉलिक्यूलर वेट को भेज देते हैं ऊपर. क्लियर. तो इफ यू नोटिस, रूट 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, डी कांस्टेंट, एन कांस्टेंट, एम भी कांस्टेंट क्योंकि गैस हमने चेंज नहीं किया, 3 कांस्टेंट एंड आर भी कांस्टेंट. तो टी इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम अपॉन रूट ऑफ टेम्परेचर. हमें चाहिए था रिलेशन बिटवीन टाइम, मीन फ्री टाइम, टेम्परेचर एंड प्रेशर. यहां पे आ गया वॉल्यूम. अब सिर्फ प्रेशर को लाना बाकी है. हाउ टू ब्रिंग प्रेशर हियर? हाउ टू ब्रिंग प्रेशर? PV इक्वल टू nRT. तो V इक्वल टू nRT by P. गुड. So you can write this as nRT, right, by P, और यह था आपका रूट T as it is. करेक्ट. गुड. तो what do you notice here is, ये आ गया आपका P
एंड बाय द वे एन और आर कांस्टेंट, तो इसको मैं t को मैं √t इंटू √t लिख सकता हूँ. I can write this t as √t into √t. उसमें से एक √t कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा √t. So you will have nr √t by p by p. Okay, so it is by pressure. So you will have t proportional to √t by pressure. Correct? Okay, then आपको फाइंड करना है सेकेंड केस का. तो T2 by T1 इज इक्वल टू क्या था प्रोपोर्शनलिटी √t. तो √T1 by T2 एंड P2 by P1. करेक्ट? T2 by T1. जाग रहे हो, गुड. अवेक. तो T2 by T1 और यहाँ पे P1 by P2. तो P1 by P2. Right? T2. How much was T2? 500. How much was T1? 300. What is P1? P1 2, right? 2 और P2 is 4, क्योंकि डबल कर दिया. बोला क्या डबल? If the pressure is double, मतलब 4 1 and 2 √5 by 3 और ये आपका यहाँ पे हाफ और ये T1 will go here, right? √5 by 3 1 by 2. What is T1? 6 into 10 power minus 8 1 and 3 3 can be written as √3 into √3. तो ऐसा कर सकते हो, मतलब इन शॉर्ट दिस इज 5 into √3 इन शॉर्ट into 10 power minus 8. करेक्ट? दिस इज 15. व्हाट इज रूट ऑफ 16? 4. तो दिस विल बी स्लाइटली लेस देन 4. 3 point something to 10 power minus 8. Oh, but exactly 4 है. Wow, good, you have exactly 4 over here. So option number B. Okay, so this is how you should be solving this question. Okay, let's revise this question again. Because the problem here is just one problem, that is not a problem. Answer is correct. Answer का कोई issue नहीं है यहाँ पे. The thing is, पहले बात तो आपको मीन फ्री पाथ पता होना चाहिए, फिर पता होना चाहिए मीन, क्योंकि ये मीन है. How do you find out mean values? I mean, of course, mean free time कैसा होगा? Distance by average velocity. तो lambda आपको पता है, average velocity. Here you need to be little careful. हमारे इस क्वेश्चन में कोई इशू नहीं आया क्योंकि you are just working with proportionalities. हमने क्या किया? हमने बोला 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, M कांस्टेंट, D कांस्टेंट, सब कुछ तो कांस्टेंट है अपार्ट फ्रॉम वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. That is fine, इसलिए हमारा आंसर करेक्ट है. बट आई टोल्ड यू वंस टू चेक एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का इक्वेशन एंड आरएमएस का इक्वेशन, राइट? तो यहाँ पे आई हैव यूज्ड वी एवरेज, बट आई एम पुटिंग इक्वेशन फॉर वी आरएमएस. तो ऐसा नहीं चलता है. यहाँ क्यों चल गया? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्रोपोर्शनलिटीज ही जरूरत थी. But sometimes if they ask you to find out mean free time directly without comparison, तो यहाँ पे आपको correct equation लिखना पड़ेगा. And you should know we have already done that in one of our previous sessions. तो याद रखना यहाँ पे V average चाहिए, that is under root of 8 by pi something. Okay, under root of 8 by pi ऐसा कुछ आता है, under root of 8 by pi RT by M. तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 8 बाय पाई ऐसा आएगा, राइट? तो ये छोटे छोटे चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा. सो दिस इज 8 बाय पाई, समथिंग लाइक दिस. ओके, गुड. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ.
So a vertical closed cylinder is separated into two parts by a frictionless piston of mass m and negligible thickness. The piston is free to move along the length of the cylinder. Okay, the length of the cylinder above the piston is L1 and that below is L2, such that L1 is greater than L2. Each part of the cylinder contains n moles of an ideal gas at equal temperature T. If the piston is stationary, important word है, okay, मतलब pressure above and pressure below, they are balancing. Okay, then its mass m will be given by, तो सबसे पहले question is simple. It just looks difficult, but it is simple. You have, let us say, a vertical cylinder. एक वर्टिकल सिलेंडर है समथिंग लाइक दिस, और इस वर्टिकल सिलेंडर में यू हैव अ पिस्टन. सो यू हैव अ पिस्टन ओवर हियर समथिंग लाइक दिस, एंड दिस पिस्टन इज फ्रिक्शनलेस, मासलेस एंड मूवेबल. तो ये पता होना चाहिए आपको. देन ऊपर का जो लेंथ है, दिस लेंथ ओवर हियर इज L1, number of moles are n and temperature is T. Number of moles in the lower part is also n and temperature in the lower part is also T. Only thing is the length of the lower part is L2. ऐसा है. तो if pressure above and pressure below, I mean this is stationary है, मतलब pressure is balancing. तो पहले तो पता होना चाहिए how to find out equation for pressure. Do you remember? Let us go back to mechanical properties of fluids. If you remember, this is a swimming tank. If you want to find out pressure at this point, how do you find out pressure at this point? कैसे find करते हो? The height is h, let us say. Pressure at depth h, और डेप्थ को आप d भी बोल सकते हो. व्हाट इज द प्रेशर एट डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर? h रो g. वेरी गुड. तो टोटल प्रेशर P इज h रो g, मतलब प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम. अगर ऊपर एटमॉस्फेयर है तो प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए. देन इफ यू नो दिस, you should know what is the pressure equation here. First of all, इसके पिस्टन के ऊपर का जो कॉलम है वो डाउनवर्ड प्रेशर लगाएगा, लेट अस से P1, ओके, और इसके नीचे का जो है वो अप्लाई करेगा अपवर्ड P2, राइट? यहां तक क्लियर? So what equation you will get here is, what equation you will have? What will be the equation that you will be getting? Oh, okay, wait a minute. पिस्टन का भी मास आपको दिया है. वेरी गुड. पिस्टन का मास दिया है, मासलेस नहीं है. क्या करोगे? How will you solve this question? पिस्टन का अगर मास है तो where is the mass acting, upward or downward? डाउनवर्ड. तो डाउनवर्ड एक एक्स्ट्रा फोर्स होगा. कौन सा फोर्स होगा? mg, ग्रेविटी का फोर्स. तो प्रेशर P2 विल बी इक्वल टू, क्योंकि एक ही प्रेशर ऊपर है बाकी के नीचे है, तो P2 विल बी इक्वल टू P1 प्लस mg. ओके, ठीक है, mg लिख देता हूं. न्यू फिजिक्स, प्रेशर इक्वल टू प्रेशर प्लस फोर्स, है ना? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्लस न्यूटन. ऐसा होगा क्या? नहीं. तो क्या रह गया वहां पे? हाउ डू डिफाइन प्रेशर? फोर्स अपॉन एरिया. तो फोर्स अपॉन एरिया ऑफ द पिस्टन, करेक्ट? ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि स्टेशनरी था. स्टेशनरी था मतलब क्या? टोटल प्रेशर ड्यू टू अपवर्ड फोर्सेस एंड ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्सेस विल बी बैलेंसिंग. अब डाउनवर्ड कौन कौन सा है? तो जो ऊपर के हाफ में गैस होगा वो
डाउनवर्ड प्रेशर एक्सर्ट करेगा पिस्टन पे, और mg है वो डाउनवर्ड है, ओनली P2 इज अपवर्ड, एंड P2 इज अपवर्ड बिकॉज ऑफ द गैस इन द लोअर पार्ट। करेक्ट। आपको क्या पूछा है, व्हाट इज m, मतलब m का ही इक्वेशन पूछा है आपको, मास ऑफ द पिस्टन। तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? इजी है, एक्सट्रीमली इजी। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? PV equal to nRT. Why? Good. But why? Because you see RT in all the options. So P2 will be nRT. अभी N to T2 लिखना चाहिए, लेकिन N1 इक्वल टू N2 बोला है, T1 इक्वल टू T2 बोला है, बाय V। कौन सा V? 1 की 2? ओके, 2 इक्वल टू nRT V1 प्लस mg by a area। ओके, देन व्हाट यू कैन डू इज, इसको शिफ्ट करो पहले, nRT 1 by V2 minus 1 by V1 equal to mg by a। Correct? Now nRT, how do you find out volume of a cylinder? मेरे पास एक सिलेंडर है, मेरे हाँ पाई आर स्क्वायर, दैट इज एरिया नॉट वॉल्यूम। पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल, आर इज मीटर, एल इज मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। मैं वॉल्यूम पूछ रहा हूं, पाई आर प्लस आर। नो, ये सिलेंडर है, दिस इज एरिया। इफ आई मल्टीप्लाई एरिया बाय लेंथ आई गेट वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एल ए इंटू एल। इफ आई जस्ट मल्टीप्लाई सरकमफरेंस मतलब 2 पाई आर बाय एल आई गेट सरफेस एरिया, मतलब हॉलो, सिर्फ ऊपर का सरफेस। तो याद रखना, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमेशा आप एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करते हो। कौन सा लेंथ? L2, क्योंकि क्या है ये? V2। A2 लिख के फायदा है नहीं, वाई? बिकॉज एरिया ऑफ द पिस्टन इज सेम फॉर लोअर पार्ट और फॉर अपर पार्ट। तो माइनस 1 बाय A टाइम्स ऑफ L1 इक्वल टू mg बाय A। करेक्ट? Now nRT by A common, 1 by L2 minus 1 by L1 equal to mg by A और A cancel out, तो m equal to nRT by G 1 by L2 minus 1 by L1 है क्या? है, दिख रहा है ये, this one, because you need to cross multiply nRT by G L1 minus L2 upon L1 into L2। ऑप्शन नंबर डी। मैं क्वेश्चन वापस रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन इज प्रीटी सिंपल, 2019 जेई मेन। सिर्फ एक वर्टिकल ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप वर्टिकल नहीं बोलोगे, कहां गया वर्टिकल? वेयर वर्टिकल। Because if you don't say vertical, then you cannot consider mg downwards, क्योंकि वर्टिकल था और पिस्टन का मास था, इसलिए एक्स्ट्रा प्रेशर डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ड्यू टू मास ऑफ द पिस्टन। ओके, तो ऊपर से और एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्टेशनरी। ऐसा कहीं तो बोला है, पिस्टन इज स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब फोर्सेस आर बैलेंस, फोर्सेस आर बैलेंस मतलब अपवर्ड प्रेशर एंड डाउनवर्ड प्रेशर इज द सेम, मतलब P2 इज P1 प्लस प्रेशर ड्यू टू वेट, दैट इज mg by a। तो P2 माइनस P1 इक्वल टू mg by a, लेकिन P2, अब प्रेशर फाइंड करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैंने बताया, वन वाज h rho g। ओके, वैसा करोगे तो भी चलेगा, बट इन एनी केस क्योंकि ऑप्शन में आपके पास RT, यू कैन सी RT एवरीवेयर, तो यू से ओके P2
will be nRT by V2. PV equal to nRT, तो P is nRT by V. तो nRT by V2 equal to nRT by V1 plus mg by A. इसको शिफ्ट करो लेफ्ट हैंड साइड में, तो nRT 1 by V2 minus 1 by V1 equal to mg by A. वॉल्यूम की जगह पे पुट एरिया इनटू लेंथ, सिंप्लीफाई एंड यू गेट फाइनल आंसर. Next question. For a given gas at 1 atmospheric pressure, RMS speed of the molecule is 200 meter per second at 127. At 2 atm pressure and 2 to 7, the RMS speed will be. हमने पहले भी सॉल्व किया है ये क्वेश्चन. You know VRMS is proportional to root of T. You know VRMS is under root of 3RT by M. हमको पता है प्रेशर का कोई रिलेशन है नहीं यहाँ पे, तो VRMS is proportional to root of temperature directly. और गैस भी सेम है, you have not changed. For a given gas बोला है मतलब गैस is same. इसका मतलब V2 by V1 will be equal to root of T2 by T1. So V2 will be equal to root of T2 by T1 into V1 under root of T2. What is T2? कितना? 2 to 7. 2 to 7 in Kelvin is 500. 1 to 7 is 400 into V1 कितना बोला है? 200. Right? Cancel. This is root 5. 4 का root 2. तो 1 जा and 100 जा, तो 100 root 5 meter per second. Option number D. Simple question. Next question. An HCl molecule has rotational, translational and vibrational motions. If the RMS velocity of HCl molecule in its gaseous phase is v bar, मतलब RMS velocity को v bar से डिनोट किया है RMS. By the way, here bar doesn't mean vector quantity. Here bar मतलब ये mean value है. Okay, तो m is the mass and kb is Boltzmann constant, then its temperature will be. VRMS is v, but you know VRMS is root of 3RT by m, correct? Then ये molecular weight होता है. Do you remember R is Na into kb T by m, right? Do you remember number of moles is number of molecules by Avogadro number or mass in gram upon molecular weight? Okay, so do you remember हमने ऐसा पहले भी सॉल्व किया है. N by m is equal to Na by m, correct? Right. So you can put यहाँ पे Na by m as n by small m. Therefore, you will have V equal to under root of 3. What is Na by m? Number of molecules by mass. Number of molecules by mass into kBt. If I square on both sides, I will get. If I square on both sides, I'll get V bar square equal to 3n by m kBt. So you will have T is equal to m v square upon 3n kb, right? But n molecule, n मतलब n how many? Singular, मतलब n equal to 1. Therefore T is equal to mv square by 3 kb. है क्या? mv square by 3 kb. Option number B. Okay, so that's it for today. We will stop at this question.